In this downstream processing, what happens is huge amount of your impurities are present within the end product. आमे ए ऑर्गेनिज्म गुड़ा को आमे ए एंड प्रोडक्ट गुड़ा को प्रोटीन प्रोडक्ट हो जहाँ भी हो आमे लाइव ऑर्गेनिज्म मानक भितर आमे एमान को पाउचे. सो ये जो इम्प्योरिटीज गुड़ाक अच्छी ये इम्प्योरिटीज गुड़ा को काढ़ा केमिति कड़ा जाए कौन करा जाए केमिति प्यूरिफिकेशन करा जाए all these things will be coming under your downstream processing. So now let us go into the detail of how all these things are done. So in our first step we are having your isolation of the genetic material. आमको first रे isolate करिबा दरकार. So isolation of your desired DNA in its purest form. सेटा सबुठु प्योर फॉर्म रे मते डिजायर्ड डीएनए मु खाली सेल रो बाहर कर देली आ यूज कर देली सेटा हेई परिबनी. आई नीड टू हैव माय डीएनए इन प्योर फॉर्म is the first step in recombinant DNA technology. So how do I get this pure DNA? We are having certain steps for it too. So first step is your breaking open the cell. Breaking open the cell by lysing the cell wall, the plasma membrane, and releasing the DNA along with macromolecules such as your RNA, polysaccharide, protein, lipids, whatever that are present. ता माने कौन आमर सेल भितरे आम सेल is having a boundary, it is having a membrane which is your plasma membrane. In case of plants we are having your plasma membrane and a cell wall, okay, and within this our cytoplasm is there. Inside our cytoplasm we are having a nucleus, and within the nucleus we are having the chromosome. Okay, so to get to that chromosome I need to break open that cell first. मो cell रो boundary टा को break करिवा पे पड़िबो. Okay, so when I am breaking this boundary of the cell, that is your plasma membrane and your cell one in case of your plants and your plasma membrane in case of your animals, then all the things that are there within the cell मते मोर क्रोमोसोम भी बाहर को आसी जाउची. क्रोमोसोम सहित मोर अदर सेल्युलर मटेरियल्स जहाँ भी सेल भितर अच्छी प्रोटीन हो आरएनए हो लिपिड हो जहाँ भी अच्छी ता सहित क्रोमोसोम सहित सेल भितर को सेमाने बाहर को आसी जाती. सो फर्स्ट स्टेप आई नीड टू ब्रेक ओपन दैट सेल और आई नीड टू लाइज द सेल. Okay, so what are the processes for lysing the cell? So for your bacterial cell we treat it with your enzyme lysosome. मो bacterial cell को जदि lysosome रे treat करिबी enzyme रे treat करिबी bacterial cell टा open हे जिबा. Then for plant cell we use the enzyme cellulase, and for fungus cell we treat with chitinase to dissolve the fungal cell wall. So ए सब enzyme गुड़ा को नहीं कि there are different enzyme for breaking open your cell of different type of organism. So taking those different enzyme I can break open the cell. So after opening your cell, what is the next step? The next step is removal of other macromolecule with use of your enzyme or with other treatment process. मु जो सेल भितर मु जो पाइली जो डीएनए पाइली बा क्रोमोसोम पाइली से क्रोमोसोम सहित मोर इम्प्योरिटीज भी अच्छी. What are they? Protein are there, RNA is there, carbohydrate is there, lipid are there. So all these things are there along with the DNA. So first I need to degrade these things. How do I degrade? Because more main interest is having a pure chromosome. So pure chromosome पाइबा पाई मु ए जिंस जाको आगो degrade करना बा दरकार. How do I degrade these things? RNA is removed by treating with enzyme your ribonuclease. RNA को degrade करिवा पे मोर RNA दरकार नहीं, so I need to degrade it. How do I degrade it? By using your enzyme ribonuclease. Then proteins are removed by your enzyme protease. प्रोटीएस यूज करिकी जहाँ भी प्रोटीन थिबो प्रोटीन गुड़ा को आमे नष्ट कर दो. देन अदर मैक्रोमोलिक्यूल बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अन्य मैक्रोमोलिक्यूल गुड़ा को तार एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में आमे से जाको डिग्रेड कर दो. बट आफ्टर डिग्रेडिंग ऑल दिस थिंग्स एम आई गेटिंग अ प्योर डीएनए? No, the degraded product is still there inside the reaction mixture. सेल भितर बाहर को आसी गला आमे मैक्रोमोलिक्यूल गुड़ा को डीएनए छाड़ी की अन्य मैक्रोमोलिक्यूल गुड़ा को डिग्रेड कर देले, बट से ट्यूब भितरे द डिग्रेडेड प्रोडक्ट आर स्टिल देयर. माय डीएनए इज स्टिल नॉट प्योर. So what is my next step?
my next step is DNA is purified, purification of my DNA. Okay, so how do I purify the DNA? DNA can be purified by your two methods. First is spinning down impurities by centrifugation. First method hochi 80 dekha, this is a tube inside which we are first lysing the cell. एठी आमे सेल नहींचे, सेल सहित एप्रोप्रिएट बफर नहींचे आउ एंजाइम्स गुड़ाक नहींचे जी कि सेल टाको लाइस करची. सेल टाको लाइस कर सारा परे दिस इज ऑल्सो हैविंग योर एंजाइम फॉर डिग्रेडेशन ऑफ योर मैक्रोमॉलिक्यूल. सो एठी आमे प्रोटीएज, RNAs and all those things we are adding to that same test tube after lysing the cell. लाइस कर सारा परे आमे से सेम टेस्ट ट्यूब रे आमे मैक्रोमॉलिक्यूल गुड़ा को लाइस करबा पे आमे एंजाइम्स गुड़ा को ऐड करी थाउ. Okay, but after this I am having my DNA along with impurities of the digested product of the macromolecules. So now how do I remove this? What I do is I just centrifuge this. If it is a genomic DNA जदि आमे isolate करबा पई चाहूचे ए ट्यूब टाकू नै कि आमे centrifuge करि दो. Centrifuge माने कोन? Centrifuge माने you must be having you must have seen washing machine, right? washing machine टा कौन करे? washing machine गोटे बहुत हाई स्पीड रे बुले आउ से जेते बड़े हाई स्पीड रे बुले whatever water is there in the washing machine it is been thrown out, and also the cloths that are there they are actually fixed to the rim. आमर जो ड्रम जो थाए से ड्रम रो रिम रे क्लॉथ्स गुड़ाक थांती. सो एक्जाक्टली दिस टेक्निक इज यूज इन योर सेंट्रिफ्यूगेशन. ए सेंट्रिफ्यूगेशन रे आमर सेंट्रिफ्यूज मशीन गोटे अच्छी जो थरे कि आमर रोटर अच्छी से रोटर भितर ए ट्यूब गुड़ा को होल्ड करबा पे होल्डर्स अच्छी. सो आमे जते बेले ए ट्यूब गुड़ा को रखिकी हाई स्पीड रे रोटेट करू. High speed, the speed it goes to for your DNA isolation around 12,000 RPM आमे यूज करता हूँ. आमे जतले हाई स्पीड रे करू तो सेथिरे कौन हुए? सेथिरे आमर जहाँ भी इम्प्यूरिटीज थिबो सेई जाक तळे रही जाए, पेलेट हो जाए. ओके, बट फॉर जीनोमिक डीएनए आमे एते अधिका स्पीड आमे जाऊनी. जीनोमिक डीएनए रो स्पीड टा बहुत कम थाए. ओके, से अराउंड आई थिंक 200 G आमे यूज करू फॉर जीनोमिक डीएनए. सो फॉर दैट सेतिकी जी रे आमे स्पिन कला परे हमर जहाँ भी इम्प्यूरिटीज तळे पेलेट हो जाए. पेलेट हो जाए माने गोटे हार्ड पेलेट भाया से साइड रे लागी की रही जाए. Okay, so now I have separated the impurities. मोर जहाँ ये red color impurities जहाँ भी थिला एटा yellow color is my DNA. So now by spinning I have separated the impurities. Impurities उड़ा को तले रही गले and the DNA of my interest is above it. Okay, so what is the second method of purification? The second method of purification is by adding your phenol chloroform. This we also call as phase separation. आमे जेते बेले phenol chloroform add करी थाउ phenol chloroform add करी कि when we shake it, first we shake it. So what happens during this process? All the impurities with a jar आमे shake कर साला परे तापरे आमे सेटा को आइदर किछि समय पे रखी दो नाले सेंट्रीफ्यूज करू. ओके, सो ता फल कौन हुए? जेते impurities जहाँ भी थिला माने डिग्रेडेड प्रोडक्ट रो से माने phenol chloroform is your organic liquid. Phenol chloroform is our organic liquid. आमे DNA कोड आरे isolate करचे we always isolate DNA in aqueous solution. आउ केबे भी aqueous solution टा organic liquid सहित मिसे नाही. तमे जदि if you take oil, first you have taken water in a beaker. Now you pour oil on that. कौन हब? आमर water it will come up and oil it will always go down. They will never intermix. मु जदि बहुत जोरे मिक्स करी कि भी छाड़ी देबी किछि समय परे सबु तक ऑयल जतक थिबो तळे रही जिवो आ वाटर उडा को ऊपर रही जिवो. So the same technique is being used over here. Your phenol chloroform it is an organic phase. So when we are adding phenol chloroform, all the impurities jete impurities achi they will get collected between the two phase.
को दीटा फेज एक्वेस फेज इन विच द डीएनए इज देयर एंड द ऑर्गेनिक फेज जो थरे कि आमर फिनोल क्लोरोफॉर्म अच्छी ए दीटा फेज भितर आम मझीरे आमर इम्प्योरिटीज टा कलेक्ट हुए ओके सो नाउ आई हैव सेपरेटेड द इम्प्योरिटीज ये जो एक्वेस फेज ऊपर जो अच्छी ता भितर मोर आउ इम्प्योरिटीज आउ नाही okay so I can centrifuge the DNA or I can use your phenol chloroform method for purifying the DNA तो मोर DNA purify हो गला now how do I extract the purified DNA my last step involves extraction of purified DNA how do I do it so for purification of the DNA what do we do is we add after मोर 80 मोर DM माने impurities गुड़ाक pellet हेला centrifugation method मु फर्स्ट कहूँ मोर impurities गुड़ाक pellet हो गला ए entire जो supernatant अच्छी आमे ऊपर जो DNA सहित जो liquid अच्छी entire thing we are calling it as supernatant सो मो पाखे ये सुपरनाटेंट अच्छी मुझेटा को आउ गोटे ट्यूब भितर मु ट्रांसफर करदेली मुझे पेलेट को नौनी खाली सुपरनाटेंट जो अच्छी सेटा को आउ गोटे ट्यूब भितर नुआ ट्यूब भितर मु ट्रांसफर करदेली एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग इट इनटू द न्यू ट्यूब देन आई एम एडिंग चिल्ड इथेनॉल देन आई एम एडिंग आइदर चिल्ड इथेनॉल हो कि आइसोप्रोपेनॉल हो चिल्ड होइथिबा दरकार जेते बेले मु चिल्ड इथेनॉल ऐड करे देन माय डीएनए विल प्रेसिपिटेट my DNA precipitated after adding of chilled ethanol. If it is a genomic DNA then what do? I carry out spooling process. माने से chilled ethanol आउ से buffer रू मु DNA टा को बाहर करिवा पे there is a process which is known as spooling. Okay, so a spooling process रे कौन हुए? I take a glass rod. A glass rod टा को मुझे ट्यूब भीतर इंसर्ट करे and then I start rotating the glass rod very gently कारण एटा DNA fragment एटा DNA fragment गुड़ाक मुझे माने हार्शली जदि मु ट्रीट करवी it will break so very gently I need to rotate it एथिरे कौन हुए so you can try it when at home तमे घरे suppose thread गुड़ा को आमे entangle करिकी तले पकेइछे आउ ता भितरे आमे गोटे stick गोटे नहीं कि आमे एमिति बुलेबा तो कौन होची से थ्रेड गुड़ाक स्टिक रे लगी जाउची आ आमे से थ्रेड गुड़ा को आराम से उठे दे पारिबा द सेम टेक्निक इज यूज ओवर हियर बट वी आर टेकिंग अ ग्लास रॉड सो वी आर कैरिंग आउट विद द स्पूलिंग मेथड इन विच आई एम रोटेटिंग द ग्लास रॉड वेरी जेंटली सो जेते भी डीएनए थिबा इट गेट अटैच्ड टू माय ग्लास रॉड एंड आफ्टर दिस आई एम रिमूविंग द ग्लास रॉड विथ अ डीएनए एंड आई एम पोरिंग इट इनटू अ न्यू टेस्ट ट्यूब ओके सो से नुआ टेस्ट ट्यूब रे ऐड कर साला परे मु एटा काहे की कली कारण मोर बाकी जहाँ भी सॉल्यूशन थिला मोर बाकी जहाँ भी बफर थिला सॉल्यूशन थिला मु सेटा को सेपरेट कर देली नाउ with this purified DNA I can dissolve my purified DNA in an appropriate buffer and store it for years. Okay, this is a first process. Now what about this phase separation method? A phase separation method there is a extractor. There is a extractor which we call as a pipette. It is a और मु एटा को कहि परिबी it is a mechanized dropper भी आमे dropper यूज करछे हाँ मु जदि ड्रॉपर रो एंड टा को स्क्वीज करिकी पानी भितर पुरे की तापरे बल्ब टा को मु जदि रिलीज कली देन वाटर इट गोज इन इनटू द ड्रॉपर so same mechanism we are using it for your extraction of this DNA from over here we are using your pipettes we are using a pipette ए पाइपेट द्वारा आमे बहुत जेंटली ए जो ऊपर जो सुपरनाटेंट अच्छी सेटा को खाली आमे नहीं नौचे गोटे नुआ ट्यूब रे ए सुपरनाटेंट को नहीं सारा पर गोटे नुआ ट्यूब रे देन वी ऐड इथेनॉल चिल्ड इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल एंड व्हेन वी सेंट्रीफ्यूज इट एटा आमे कोन पे यूज करछे एटा हमरे जते बेले डीएनए साइज टा छोटो थाए आमे जीनोमिक डीएनए भी सेंट्रीफ्यूज करूँ किंतु कम आरपीएम रे करूँ आउ ए जो छोटो साइज ऑफ डीएनए गुड़ाक आमे बहुत अधिक आरपीएम 12,000 आरपीएम रे आमे सेंट्रीफ्यूज करूँ तो आमे जते बेले सेंट्रीफ्यूज करूँ आम डीएनए टा प्रेसिपिटेट हो जाउची ए जो ट्यूब टा जो अछि ट्यूब रो एंड रे जो नुआ ट्यूब रे आमे ट्रांसफर करछे ता एंड रे प्रेसिपिटेट हो जाउची डीएनए प्रेसिपिटेट हो सारा परे मु आराम से तार सुपरनाटेंट बाहर कर देली कारण एबे आ सुपरनाटेंट रो मोर डीएनए नाही
मो डीएनए ट्यूब रो तले प्रेसिपिटेट हो जाइए तो सुपरनाटेंट रू आराम से सुपरनाटेंटा मु आराम से बाहर कर देली आ बाकी जो डीएनए रहिला सेटारे मु मोर एप्रोप्रिएट बफर दे देली जो थरे कि डीएनए टा सॉल्युबलाइज हो जिवो सो दीज आर द टू मेथड्स बाय व्हिच आई कैन कैरी ऑन विथ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए in the purest form. Okay, so now I have got my DNA in the purest form. After getting my DNA in the so a process को नहीं कि मो प्लाज्मिड DNA टा को भी प्यूरिफाई करूची किंबा मो वेक्टर DNA को भी प्यूरिफाई करूची and I am also purifying the gene of my interest or the DNA of my interest, whatever it is. So I am purifying it. After purification, what do? I go on with the restriction digestion. मो जदि genomic DNA निये को भी DNA निये I need to go on with a restriction digestion. कहीं कि कारण restriction digestion जदि genomic DNA अच्छी I get the gene of my interest through restriction digestion. ओके मोर जीन ऑफ इंटरेस्ट है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन रो मु पाई गली आ वेक्टर डीएनए को ओपन करबा पई भी मु से सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा मु यूज करछि टू ओपन द वेक्टर आफ्टर ओपनिंग ऑफ द वेक्टर आमर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे आमे दीटा जाको कट कर साले तापरे आमर लाइगेशन रे सुविधा हो जिवो जेते बेले आमे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे दीटा जाको इंसर्ट डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करछे आमर लाइगेशन टा सुविधा हो जाए सो सेकंड प्रोसेस इज योर cutting of your DNA with it might be a vector DNA, it might be a insert DNA, whatever it may be, both the DNA we are cutting it with eco R1 separately. आमे एकाठी गोटे ट्यूब रे करूनु अलग अलग ट्यूब रे वेक्टर और इंसर्ट डीएनए को आमे कट कलु ओके सो आफ्टर कटिंग व्हाट डू आई डू एटा सदा बेले दरकार हुए नी बट somehow we always end up with your PCR. आमे जेते बेले भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरंभ करछु आमको ए पीसीआर टेक्नोलॉजीटा सदा बेले दरकार हे थाए सपोज मोर स्टार्टिंग मटेरियल इज टू लेस if my starting material the DNA of my interest is too less I need huge amount of your DNA for your cloning purpose okay then what do I can amplify the DNA of my interest with the help of your PCR. Your polymerase chain reaction or your PCR is a laboratory in vitro technique for generation of your large quantity of your DNA. For generation of for amplification of the DNA of our interest, we use this technique which is known as polymerase chain reaction. एटा आम बॉडी भितर होउची कि polymerase chain reaction नहीं, it is an in vitro technique. आमे बाहरे गोटे machine भितर we carry on with this reaction which is your polymerase chain reaction. So PCR is a cell-free amplification technique for synthesizing multiple identical copies, billions of copies of any DNA of interest. एटा PCR रे कौन होची it is a cell free technique, it is not carried out inside the cell, it is carried out outside. Okay, and in this what do we get multiple genetically identical आमे मोर जो gene of interest अच्छी तार जो sequence अच्छी exactly that sequence I will be getting multiple copy of that gene of my interest जोटा को कि मु एम्प्लीफाई करबा जहाँ जो डीएनए टा को मु बहुत अधिक अमाउंट रे चाहिथिली से डीएनए टा एम्प्लीफाई होची आ एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी ही मु पाउची सेथिरे किछि भी माने चेंजेस न थाए बेस पेयर रे किछि भी चेंजेस न थाए ओके सो It was first developed in 1984 by Dr. Carey Mullis, for which he received Nobel Prize in 1993. And the thing that he discovered then in 1993 is now a very common and essential tool in our biotech lab or in our recombinant DNA labs, recombinant DNA technique labs. We cannot think of recombinant DNA technology without this PCR technique. आमे ए PCR technique बिना आमे recombinant DNA करी परिवा नाही कारण को ना को स्टेज रे आमको एम्प्लीफिकेशन निहाती दरकार हेई थाए okay so this PCR is done in a machine, this PCR is done in a machine we call a PCR machine. So a PCR machine टा जदि गोटे recombinant DNA lab रे नाही आमे further आमर experiments आमे करी परिबा नाही. It is a very essential technique which is highly important
for carrying out your recombinant DNA technology, for carrying out all the experiments which are there in your recombinant DNA technology. So what are the essential requirements for a PCR? PCR माने कौन मोर जीन ऑफ इंटरेस्ट जोटा अच्छी मुझेटा को एम्प्लीफाई करुच्ची. सो आई नीड अ टेम्पलेट, I need a DNA template. So the target gene to be amplified, or the target gene of my interest that is to be amplified, I need that one. आउ से target gene रो length माने PCR आमर जो होची से target gene रो length केते पर्यंत आमर PCR हे परिबा. minimum length आमे 100 base pair minimum length PCR करि परिबा. maximum 35,000 base pair रो आमे PCR करि परिबा. बा एतिके लेंथ ऑफ टेम्पलेट को आमे एम्प्लीफाई करि परिबा. ओके, देन व्हाट एल्स वी आर नीडिंग? वी नीड 2 प्राइमर्स. प्राइमर्स कौन आमे आगुरु भी पढ़ीचे, जेते बेले रेप्लिकेशन रे भी आमे पढ़ीचे. जेते बेले रेप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, वी नीड योर primers. We need a short oligonucleotide. We need a short oligonucleotide which is complementary to the flanking ends of a template. Flanking ends माने कौन? Suppose this is my DNA that I am using as a template. This is the DNA of my interest. So I am having a 5 prime. जदि एटा गोटिए strand, ए गोटिए strand रो 5 प्राइम एंड मोर गोटे अच्छी 3 प्राइम एंड गोटे अच्छी. प्रति स्टैंड रो 5 प्राइम एंड थाए और 3 प्राइम एंड थाए. दिस एंड आर योर फ्लैंकिंग एंड्स. दिस एंड आर योर फ्लैंकिंग एंड्स. आउ प्राइमर मु केमिति डिजाइन करछि? प्राइमर इज सिंथेटिक. पीसीआर पे सिंथेटिकली प्राइमर इज डिजाइन. से प्राइमर टा कौन? इट इज अ शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड. शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माने ता पाखरे 15 रु 35 बेस पेयर्स अच्छी. 15 रु 35 बेस पेयर अच्छी. ए बेस पेयर गुड़ाक ए बेसेस गुड़ाक कौन? रैंडम प्राइमर भितर ना, तार सीक्वेंस इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू द फ्लैंकिंग एंड्स. आमर जो 2टा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो रहिला, ए 2टा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रो फ्लैंकिंग एंड सहित एटा कॉम्प्लीमेंटरी हेथिबा दरकार. ओके, सो आई नीड योर 2 प्राइमर्स. कहीं प्राइमर दरकार? जदि प्राइमर नथिबो आमर डीएनए पॉलीमरेजटा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंडटा को सिंथेसाइज करि पारिबो नाही. ओनली इफ अ प्राइमर, इफ अ शॉर्ट oligonucleotide is already there, it will go and adding the nucleotide one by one complementary to the strand which I am taking as a template. So I need 2 primers. Then I need all the 4 DNTPs, DATP, कारण यही सबू गुड़ाक मोर DNA synthesis रे help करिवे. So I'll need all the DATP, DCTP, sorry, it is repeated, it is DGTP and DTTP. This is repeated over here, this is DGTP. Okay, so all the 4 DNTPs I need. Okay, what else? I need a polymerase. But the polymerase that I am using for PCR is not a regular polymerase. Excuse me, आम बॉडी भितर जो polymerase थाए, आम बॉडी भितर polymerase गुड़ाक they have a particular temperature at which they are active. आम body temperature is 37 degrees centigrade. So our DNA polymerase, the enzyme which is there within us, it is active at 37 degrees centigrade. If we are increasing the temperature, it will become inactive. But jete bele ame PCR karuche, we will see as we go further, we will see that temperature of the reaction mixture increases to up to 96-97 degrees centigrade. आमर रिएक्शन मिक्सर टेम्परेचर टा 96 to 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत भी चली जाव. सो एथिरे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज गुड़ाक एथिरे नष्ट हो जिवे. दे विल बी इनएक्टिवेटेड, दे विल बी डिग्रेडेड अंडर दिस हाई टेम्परेचर कंडीशन. So for the PCR purpose we need special DNA polymerase. Where from do I get this special DNA polymerase? So you must be aware of your hot spring. हॉट स्प्रिंग तुम मैंने देखी तप्त पानी रे आमर हॉट स्प्रिंग अच्छी. सो ये हॉट स्प्रिंग गुड़ाक भितर बैक्टीरिया माने माने रहंती भी आउ थ्राइव भी करती. एते गरम हॉट स्प्रिंग माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी जाई पारे पानी टेम्परेचर. सो एते गरम भितर नॉर्मली को भी बैक्टीरिया रहेनी.
बट दे आर सर्टन बैक्टीरिया जो माने कि एते गरम एते एडवर्स कंडीशन भितर रहीकि से माने थ्राइव भी करचंदी से माने ग्रो करचंदी से माने डिवाइड करचंदी सब किछि करचंदी डेफिनेटली दैट दे डीएनए पॉलीमरेज मस्ट बी समथिंग डिफरेंट तांको डीएनए पॉलीमरेज टा बहुत स्टेबल थिबो फॉर हाई टेम्परेचर okay so what the scientists did is for this PCR purpose they discovered a DNA or they took out the DNA from this bacteria particularly co bacteria ru amara DNA polymerase ame use karthau from your Thermus aquaticus there is a bacteria Thermus aquaticus जे कि hot spring भितर रहे आ यार DNA polymerase isolate करके we use it for the purpose of your PCR okay so all these things आमे गोटे ए सब तक जिनस रा आमे गोटे reaction mixture prepare करथाउ आमर एते ए सब तक जो जिनस रहा आम रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करथाउ कोथरे प्रिपेयर करथाउ दीज आर योर माइक्रोफ्यूज ट्यूब्स दिस ट्यूब आर योर माइक्रोफ्यूज ट्यूब्स दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर योर PCR वी कॉल देम एज अ PCR माइक्रोफ्यूज ट्यूब okay so if I have to carry on with a huge number of PCR मु जदि गुड़ाए जीन रो मोर PCR दरकार अलग अलग जीन रो सेइथि पई भी आम पाखरे connected microfuse tube इमिति आसे okay for our convenience connected microfuse tube आसे so मु appropriate buffer एठी हमको गोटे watery region हमको देखा जाउची so this is a buffer in this buffer we are having all these things mixed up in a buffer okay so ए microfuse tube भितर आमे ए सब गुडा को जिंस आमे mix कर दई थाउ with an appropriate buffer and now we put it in a PCR machine okay ए PCR machine भितरे आमे तारो कंडीशन उडा को ऑलरेडी सेट कर दे थाउ आमे तारो टेम्परेचर कंडीशन को टेम्परेचर रे केते बेले कोन हबो से टेम्परेचर कंडीशन आमे ऑलरेडी वी आर हैविंग अ कंट्रोल पैनल ए कंट्रोल पैनल रो हेल्प रे आमे ऑलरेडी तारो टेम्परेचर कंडीशन उडा को सेट करके रखी दो देन वी put our tubes we put our microfuse tube inside this cavities which are present in the PCR machine एटा रखी साला परे तापरे आमे बंद कर दो लिड टा को बंद कर देला परे देन वी स्टार्ट द PCR प्रोसेस सो इट इज डन बाय द PCR मशीन एटा बहुत माने कॉमन PCR मशीन गोटे लोअर एंड PCR मशीन which is present in most of the labs now your high grade PCR machines have also come a high grade PCR machine उडा को they are attached to your computer and real time रे आमर रियल टाइम रे आमर जो PCR होची एम्प्लीफिकेशन केति की होची प्रतिटी साइकिल रे केमिति PCR होची आमे आमको कंप्यूटर से सब फीडबैक दे दिए okay so high grade PCR machines are also there this is a base PCR machine that I have shown you over here now what are the things that are going on inside a PCR machine कौन करे PCR machine रे आमे बेसिकली आमर रिएक्शन आमे गोटे प्रकार रिएक्शन आमे रिपीट करी थाओ फॉर 20 to 30 साइकल्स ओके गोटे सेट ऑफ रिएक्शन आमे रिपीट करथाओ फॉर 20 to 30 साइकिल सो गोटे साइकिल भितरे what are the steps that have been carried out in a single cycle because that single cycle I am repeating it for 20 to 30 cycles so गोटे साइकिल भितर कौन कौन स्टेप्स अच्छी the steps are your denaturation your annealing and your extension 3 steps are there what are they are denaturation annealing and extension so we will be going into all these steps first when I am taking a template DNA my template DNA is double stranded for synthesis of your DNA I need single stranded DNA so I need to break both the strands of the DNA. I need to separate, not break, I need to separate both the strands of the DNA. Then how do I separate? If I increase the temperature to about 96 degrees centigrade, then I will be breaking or I will be denaturing the DNA. Denaturing माने कौन मु दीटा जाक स्ट्रैंड को अलगा करी दउची मु जदी PCR मशीन रो टेम्परेचर टाको 94 ru 98 मु मझीटा ये नहीं 96 ओके सो ए टेम्परेचर रे मु जदि हीट करे
मोर रिएक्शन मिक्सचर को, देन आई एम गेटिंग योर 2 strands ऑफ योर डीएनए, डीनेचर डीएनए मते फर्स्ट मिलगला. दिस इज हाईली एसेंशियल बिकॉज these 2 strands now they will be forming a template for formation of the complementary strand. Okay, after this denaturation process, now annealing process will be going on. What is annealing? आमर प्राइमर अच्छी, आमे प्राइमर ऐड करचे. मु जदि आफ्टर द हीटिंग इट, इफ आई रिड्यूस द टेम्परेचर टू अबाउट 55 to 70 degree centigrade, if I am reducing the temperature to about 55 to 70 degree centigrade, then what happens, this primer they will base pair with their flanking ends. काहे की base pair करिवे, कारण तांको base pair उडा को complementary to the flanking ends. ओके, आमे एमिति डिजाइन करचे, आमे सिंथेटिकली ए प्राइमर गुड़ा को एमिति डिजाइन करचे, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द फ्लैंकिंग एंड्स. ओके, सो व्हेन आई रिड्यूस द टेम्परेचर, देन द प्राइमर्स विल anneal, they will anneal or form, they will make base pairs with your complementary strand of the template DNA. ओके, एटी टेम्परेचर रेंज दिया है 55 to 70 degree centigrade. वाई इज दिस लॉन्ग टेम्परेचर रेंज? कारण आमर प्रतिटी प्राइमर पाए आमे टेम्परेचर टाको स्टैंडर्डाइज करथाउ. आमु कहि परिबिनी गोटे सेट ऑफ प्राइमर नहीं कि जे मोर 45 रे मोर पीसीआर हे जिवो नाही. जेते बेले आम पाखो को प्राइमर आसी थाए, व्हाट डू वी डू इज वी सेट अप रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, 55 then 60, 65, 62 एमती अलग अलग टेम्परेचर रे आमे पीसीआर रिएक्शन फर्स्ट स्टैंडर्डाइज करि थाउ. को टेम्परेचर रे हमर भल पीसीआर होउची बा को टेम्परेचर रे ए जो प्राइमरटा ठीक से एनिल होउची, आमे ए एनिलिंग टेम्परेचरटा को आमे स्टैंडर्डाइज करि थाउ. स्टैंडर्डाइज कर साला परे जो थरे सबुडु भल पीसीआर हैला, आमे फर्दर एम्प्लीफिकेशन पाई सेही टेम्परेचर टी को आमे नो. Okay, so this is the annealing process. After annealing, what happens? Your extension reaction will go on. This extension reaction take place at about 72 degree centigrade. Extension माने कौन? मोरो दीटा strands of DNA separate ही गला, प्राइमर गुड़ा को एनिलिंग रिएक्शन रे आसिकी एनिल हे गला. Now I need to produce the complementary DNA. ये जो दीटा जो टेम्पलेट अच्छी तांकर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोड्यूस करवा दरकार. से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोड्यूस करने कौन हम मते न्यूक्लियो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड गोटे पर गोटे ऐड करवा दरकार. For this addition of this complementary nucleotide, I need a DNA polymerase. So now this DNA polymerase, it will come into picture and it will bind to both the strands, both the single stranded DNA, and it will carry out the addition of your nucleotide to the end of the primer. Primer जोड़ी सरुची ता पारे जो nucleotide, suppose this is A, say T, से T टा को ऐड करिबो, टी डीएनटीपी टाको से ऐड करिबो एंड कॉम्प्लीमेंट्री देखिकी से कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस गुड़ा को ऐड करी जीवो. सो दिस एक्सटेंशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज, किंतु केते टेम्परेचर रे 72 डिग्री सेंटीग्रेड रे. आमे ए रिएक्शन ए गोटे साइकिल भितर भी आमे देखिचे टेम्परेचर आमर 98 डिग्री सेंटीग्रेड रु 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत भी जाई पारे. सो 98 रु 50 डिग्री पर्यंत आमर टेम्परेचर अप एंड डाउन होची गोटे साइकिल. ओके, सो एते टेम्परेचर चेंज को विस्टैंड करिवार डीएनए पॉलीमरेज भितर कैपेसिटी रहिबा दरकार. सेथिपाई आमे थर्मस एक्वाटिकस जे कि हॉट वाटर स्प्रिंग रे रहे, जे कि एडाप्टेड हो जाइछि एते हाई टेम्परेचर को विस्टैंड करिबा पे, आमे तार टैग नै थाउ. आ सेथिपाई आमे से टैग रो ना आमे से डीएनए पॉलीमरेज रो ना आमे tag DNA polymerase आमे कही था. Why tag? This T stand for your genus name, that is your thermus. AQ is for your first two letter of your species name, that is AQ. आमे short form रे when we are using we call it as tag. आमे tag DNA polymerase भी ना कह के we call it as tag. So that's why we use your tag DNA polymerase. So आमर गोटे cycle भितरे we carry out this 3 processes, these 3 steps. ए PCR मशीन ए 3टा स्टेप गोटे साइकिल रे करे. सो गोटे साइकिल पर मु स्टार्ट करथिली केतेरे गोटे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रे. ओके, एंड व्हाट आई एम एंडिंग अप विथ? आई एम एंडिंग अप विथ 2 strands of DNA. The amount of DNA has doubled in single cycle.
है। सो तापरे नेक्स्ट मु जेतेले आउथरे नेक्स्ट साइकिल रे पुणी आउथरे मोर डिनेचुरेशन हम। नेक्स्ट साइकिल रे डिनेचुरेशन हेले मते केतेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलिबो 4टा सिंगल स्ट्रैंडेड। फर्स्ट मु पाइतली 2टा, नाउ आई एम हैविंग 2 डीएनए 2 डबल हेलिकल डीएनए, तो मते सेथरु एबे 4टा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलिबो। आ एई 4टा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रु कंप्लीट मोर 4टा डीएनए मते मिलिबो। नेक्स्ट साइकिल रे अगेन सेटा प्रतिटी साइकिल रे हमर अमाउंट ऑफ डीएनए टा डबल हे जाए। सो एट द एंड ऑफ अबाउट 20 to 35 साइकिल, यूजुअली आमे पीसीआर 20 to 35 साइकिल जाए आमे देई थाउ। सो एट द एंड ऑफ दिस साइकिल्स आई विल गेट बिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ अ सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, सो मु जो ए पीसीआर मशीन जो देखेली, ए पीसीआर मशीन भितर मु केते साइकिल पाई करिबी, गोटे साइकिल रो मोर डिनेचुरेशन टेम्परेचर केते, एनिलिंग टेम्परेचर केते, देन एक्सटेंशन टेम्परेचर केते, सबु तक मु ए पीसीआर मशीन रे मु फीड कर दिए। फीड कर साला परे देन दिस मशीन कैरीज आउट विथ अ पीसीआर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमें कहीं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करूँ, we use this technique to generate huge amount of your starting material, that is a DNA of our interest. Okay, so I am now having your huge amount of the starting material. I am having my plasmid of interest, एमानु को नहीं कि मु already cut कर साची with a restriction enzyme. It might be an EcoR1. If I am using EcoR1, I am cutting both the inset and the vector with the same restriction enzyme. After cutting both of them with the same restriction enzyme, I purify them, and after purifying them, what I am doing, I am going with the ligation process. तो तुम माने एतक पर्यंत जो देखिल, आमे फर्स्ट डीएनए आइसोलेट कले। ओके, डीएनए आइसोलेट कला परे आमे डीएनए टा को प्यूरिफाई कले। डीएनए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रे हमर किछिटा डीएनए हमर लॉस हो जाए। ओके, so purified DNA pare, then we are going on with this restriction enzyme digestion. After this restriction enzyme digestion, again we are going on with purification process. प्रतिटी स्टेप रे हमर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होउची। सो ए प्रतिटी स्टेप रे जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होउची हमर डीएनए कमी कमी जाए। ओके, तो से आमर पीसीआर आमे जो करूँ, आमे पीसीआर कहीं करूँ ताकि आमर स्टार्टिंग रू ही बहुत अमाउंट ऑफ डीएनए अच्छी, प्रतिटी स्टेप रे कमी कमी गले भी आमर एंड रे वी विल बी हैविंग इनफ डीएनए फॉर आर दिस लाइगेशन पर्पस एंड फॉर क्लोनिंग। ओके, सो द फोर्थ स्टेप इज लाइगेशन। द प्यूरिफाइड डीएनए एंड द वेक्टर are cut with the same restriction enzyme. Same restriction enzyme रे cut कले तांकर sticky end गुड़ा को create हला, sticky end or the flaking end or the flush end. Even यार अभी insert अभी sticky end create हला. So now what will happen if I am taking both this DNA, this insert DNA and this plasmid DNA or the vector DNA in a reaction mixture in a microfuse tube in proper amount of buffer. मु जदि ए दुईटा जाक नौची, फर्स्ट व्हाट दे विल डू इज दे विल गो ऑन विथ अ बेस पेयरिंग ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए। सेमानंकर जो कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए आमे गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे काटिचे। सो से गोटे एठी देख TTAA, एठी TTAA अछि, तार कॉम्प्लीमेंटरी एंडटा अछि इंसर्ट पाखरे AATT। ओके, सो ए जो कॉम्प्लीमेंटरी एंड आग एमानंकर बेस पेयरिंग हेइ जिवो। बेस पेयरिंग हेला परे भी पूरा जोड़ी है आम इंटरेस्ट आमर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कहीं जोड़ी है कारण फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट है का भितर लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ जी जो अच्छी आमर वेक्टर लास्ट न्यूक्लियोटाइड जी आमर इंसर्ट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ए जो अच्छी ए दुईटा भितर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हवा दरकार। फॉस्फोडाइस्टर एट बोथ द एंड्स आमर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हवा दरकार। Only after phosphodiester bond have been created, then we get an intact chromosome. So who creates this phosphodiester bond? It is created by your enzyme DNA ligase. Okay, so since DNA ligase is carrying out with the creation of your phosphodiester bond, आगो complementary base गुड़ा को एनिल हो जाइछंती, तापरे ligase आसी की phosphodiester bond create करी की insert को जोड़ी दिए vector सहित।
Okay, so since DNA ligase is carrying out with this process, this reaction is known as your ligation process. After this ligation process, now we will be getting your recombinant DNA. हमको जो molecule, हमको जो DNA molecule जो मिलला, we call it as a recombinant DNA. Then आमे एबे जो अलग अलग सोर्स रु जो डीएनए गुड़ा को नहीं कि जो मिसौचे, सो वी कॉल दैट टर्मिनोलॉजी, आमे सेटा को कौन कहबा, वी कॉल इट एज रिकॉम्बिनेशन. वाई वी आर कॉलिंग इट एज रिकॉम्बिनेशन, कारण आमे दीटा अलग सोर्स रु डीएनए आने की आमे जोड़ुचे. दैट्स व्हाई द टर्मिनोलॉजी दैट वी विल बी यूजिंग इज योर रिकॉम्बिनेशन. एंड द टेक्नोलॉजी माने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा को पाइबा पे आमे जो जो स्टेप्स दे के आछे बा आमे जो जो टेक्निक यूज करछे, जो टेक्नोलॉजी टा को यूज करछे, वी कॉल इट as recombinant DNA technology. Okay, so this is all about your ligation process. Now ligation है सारी कि आमर गोटे recombinant DNA create है साला परे, then what is there, we need to insert this recombinant DNA into your host. What is host? Host is an organism that will be multiplying and propagating the recombinant DNA of our interest. Okay, so आमको ए recombinant plasmid टा गोटे host भितरे introduce करिबा पे दरकार. So there are various mechanism, there are various techniques to introduce your this recombinant DNA into host. मु एठी ओनली मेजर टेक्निक्स गुड़ा को मु कहूची, ता माने नहीं दीज आर द ओनली टेक्निक्स, या बादे भी आउरी बहुत टेक्निक्स अच्छी. आई एम ओनली गोइंग ऑन विथ अ मेजर टेक्निक्स दैट वी फॉलो. सो व्हाट आर दे? योर ट्रांसफेक्शन इज देयर, sorry, transformation. First is your transformation, then your transfection, then electroporation, micro injection, bioelastic, and your lipofactions. So all these techniques, these are different techniques through which we can introduce the DNA of our interest or the recombinant DNA into host. So आमर सुविधा अनुसार आम पाखे कौन अवेलेबल, आम लैब रे कौन अवेलेबल, आमे से ही सुविधा अनुसार आमे चूज करूँ आमे को वे रे आमे recombinant DNA टा को गोटे होस्ट भितरे इंट्रोड्यूस करि परिबा. So first I will be going to your transformation. What is this transformation? The deliberate introduction. हाँ, आउ गोटे वर्ड मु छाड़ी देछि, आमे ए जो इंसर्शन जो करूचे into host, आमे deliberately we are introducing the recombinant DNA. होस्ट सहित आमे जदि आमर recombinant DNA टा रखिबा, से आपे आपे से मन इच्छा ता भितर को नहीं जीवनी. आमे ताको प्रेशराइज करूचे, आमे डेलिबरेटली आमे ताको कहूचे नो यू हैव टू टेक इट. आमे ताको कहीदेले तो से माने नहीं जीवेनी. व्हाट आई मीन इज वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट in which the cell becomes compelled or the host becomes compelled to take in the DNA. So we are introducing this recombinant DNA deliberately. Okay, so what is your transformation? The deliberate introduction of your recombinant DNA into bacteria from its surrounding with the help of your chilled calcium chloride is known as your transformation. माने आमे बैक्टीरिया नहीं, आमे ये जो माइक्रोफ्यूज ट्यूब मु देखली से माइक्रोफ्यूज ट्यूब भितर आमे बैक्टीरिया भी नहीं गले गोटे बैक्टीरिया नौचे नहीं. वी आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ योर बैक्टीरिया. वी आर टेकिंग बैक्टीरिया triple the amount of a recombinant DNA. Okay, then we are adding your chilled calcium chloride. Okay, chilled calcium chloride आमे use करूचे. ए chilled calcium chloride add करसाला परे, then what do? We give it a heat shock. आमे ए सेल गुड़ा को heat shock दो. Chilled calcium chloride आमे जते बड़े use करूचे, temperature of the entire reaction mixture is about your 4 degree centigrade. It is about your 4 आम सेल गुड़ा को DNA सबु किछि आमर 4 डिग्री अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे अछंती. सो एबे मु हीट शॉक देबी. हीट शॉक माने कोन, ए 4 डिग्री रो काडी की डायरेक्टली मु 42 डिग्री सेंटीग्रेड को सेल गुड़ा को एक्सपोज कर दोछि. So in presence of this calcium chloride, when I am giving a heat shock, what happens is the cell
become competent, the cell becomes competent to take in the recombinant DNA. Competent माने आगुरु से नहीं न था मु जदि ये सब प्रोसेसेस न करथांती ताको चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड दे न थांती हीट शॉक दे न थांती से आगुरु खालीटारे नहीं न थांता. So now with all these processes now the cell is becoming competent to take in the recombinant DNA. Okay, so when we are carrying this process in your bacteria we call it as transformation, and the bacteria which is having your transformed DNA or your recombinant DNA we call it as a transformed bacteria. Okay, now this is your process of your transformation where in your chemical surrounding, that is where in the presence of calcium chloride upon introduction of heat shock, giving a heat shock, the cells take in the recombinant plasmid. Now the second process is your transfection. Eta gote process hala, aw kona process achi through which we can introduce. The second one is your transfection. When DNA is introduced with the help of phase particles, then the process is known as transfection. आमे already bacteriophase पढ़ी सारलेनी, आमे वेक्टर रे आमे already bacteriophase पढ़ सारचे. तो बैक्टीरिया भितर को जेते बेले recombinant DNA introduce करिबा पाई we use this phase particle. When we use this is a phase, bacteriophase, it is having the recombinant DNA. So when I am infecting the bacteria with phase particle, it is inserting the DNA, the recombinant DNA into the bacteria. Okay, so where from I am getting the word transfection? From two words, transfection. It comes from fection comes from your infection. Okay, so एठी आमे infect करोचे bacteria टाकू. ओके, ए इन्फेक्शन करैबा द्वारा कौन होची आमर बैक्टीरियल सेल टा ट्रांसफेक्टेड सेल हो जाउची. द सेल नाउ एटी ट्रांसफॉर्म सेल आमे कहूचे, बट जेते बेले आमे फेस पार्टिकल थ्रू रु आमे इंट्रोड्यूस करूचे गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन द सेल इज बिकमिंग योर ट्रांसफेक्टेड सेल. ओके, सो बैक्टीरिया रे जेते बेले आमे इंट्रोड्यूस करूचे थ्रू फेस पार्टिकल वी कॉल इट एज ट्रांसफेक्शन. Another thing is that in eukaryotic cell भितर आमे को भी मेथड रे हो ना कहीं जो भी सेटा ए कैल्शियम क्लोराइड मेथड रे हो या लिपोफेक्शन थ्रू रू हो किंबा इलेक्ट्रोपोरेशन हो, व्हाट एवर द मेथड माइट बी, जेते बेले आमे यूकैरियोटिक सेल भितर को आमे transformed DNA or the recombinant DNA we are introducing, we call that cell as your transfected cell and we call that process as your transfection. माने आमे बैक्टीरियल सेल रे आमे दीटा टाइप देखिले, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, किंतु आमे फॉर यूकैरियोटिक सेल जो भी मेथड रे जीनोमिक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा सेल भीतर को जाउची, यूकैरियोटिक सेल होस्ट को जाउची, we will be calling it as transfection. We will not be calling it as transformation. Why? कारण आमर यूकैरियोटिक सेल रे आमे ट्रांसफॉर्मेशन केते बेले यूज करू, we use the term transformation for your cancerous cell. जेते बेले आम भितर सेलटा कैंसरस हो जाए आमे सेई सेल गुड़ा को ट्रांसफॉर्म सेल कहू है. सो गोटे कन्फ्यूजन जो हो जाए ट्रांसफॉर्म सेल को नहीं कि मु सपोज गोटे ट्रांसफॉर्म सेल कहूँ, एम आई टॉकिंग अबाउट दिस कैंसर सेल और एम आई टॉकिंग अबाउट दिस cells which are having the recombinant DNA. So a confusion taku alaga kariba pai we use the term transfection for your introduction of your recombinant DNA into your eukaryotic cells. Now coming to your electroporation, there is another method through which we can introduce the recombinant DNA. It is called the electroporation. What is done in this electroporation? Electric current is used to create transient microscopic pore. Transient microscopic pore. आमे cells नीचे, आमे recombinant DNA नीचे, गोटे रिएक्शन मिक्सचर रे नहीं छे. ए रिएक्शन मिक्सचर रे आमे जते बेले गोटे पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करछे. When we are introducing electricity, what is it? Example is given over here, your 15 kV per cm.
15 kb/cm केते पल्स रे 5 माइक्रोसेकेंड पल्स रे आमे जते बेले ए इलेक्ट्रिसिटी टा को इंट्रोड्यूस करछे देन दिस इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इट डज इट क्रिएट्स योर ट्रांजिएंट माइक्रोस्कोपिक पोर ट्रांजिएंट माने कोन दिस आर नॉट परमानेंट हठात कि गोटे पोर्टा क्रिएट हो गला तापरे पुणी बंद हो जाए आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे से जो भी सेल नहीं से सेल मेम्ब्रेन रो हठात कि गोटे पोर गोटे कणा गोटे क्रिएट हो जाउची आउ ता परे परे बंद हो जाउची okay so when this transient pores are created the host cell it can take in the recombinant DNA into it through this transient pores okay so this is the method of your electroporation. Now what is the fourth method? The fourth method is your micro injection. Micro injection माने आमे जते बेले इंजेक्शन नौचे आमे डायरेक्टली आम बॉडी भितर को आमे इंट्रोड्यूस कर दोचे जहाँ भी वैक्सीन हो किसी ड्रग हो जहाँ भी हो आमे आम बॉडी भितर को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दोचे. So in the same way by this micro injection process we are directly introducing our recombinant DNA into the cell. We can also directly introduce it into the nucleus of the host organism if it is a eukaryotic organism. Okay. So why it is called your micro injection? Because all the processes for your micro injection it is done under your microscope. मु मो खाली आखिरे मो सेल देखि परिबिनी मो खाली आखिरे सेल देखि परिबिनी खाली आखिरे जदि सेल देखि परिबिनी कोटी सेल अछि मु जानिनी कि मु इंजेक्ट भी करि परिबिनी. So all this processes is done under the microscope. So how do we do it? First we are having a holding pipette. एटा गोटे होल्डिंग पाइपेट गोटे आमर होल्डिंग पाइपेट आमे फर्स्ट सेल टाको आमर माइक्रोस्कोप तले आमे रखिले आमर व्यू एरिया भितर आमे जेति कि व्यू करि पाउचे जो एरिया थ्रू द माइक्रोस्कोप से एरिया भितर आमे सेल टाको रखिले से सेल टाको आमे होल्ड कर देले विथ द हेल्प ऑफ अ होल्डिंग पाइपेट. काहे कि मु जदी सेल टाको होल्ड करूनी मु जदी सेल टाको गोटे फिक्स जगह रे मु रखुनी मु जेते बेले इंजेक्ट करबा पई जिबी सेलटा मूव करिवो मोर व्यू रेंज बाहर को मोर माइक्रोस्कोप रो व्यू रेंज बाहर को सेलटा चली जीवो एट द सेम टाइम आई वोंट बी एबल टू इंजेक्ट इट आल्सो. सो टू कीप द सेल इन अ प्रॉपर प्लेस एट अ फिक्स्ड प्लेस आई नीड टू हैव अ होल्डिंग माइक्रोस्कोप. मु गोटे होल्डिंग पाइपेट मु गोटे होल्डिंग पाइपेट रे मु आगो सेलटा को धरि नेली माइक्रोस्कोप तले धरी नेला परे देन आई यूज अ माइक्रो इंजेक्टर. आमर माइक्रो इंजेक्टर अच्छी माइक्रो इंजेक्टर रो नीडल गुड़ाक दे आर वेरी फाइन. यू इमेजिन आई कैन सी अ सेल मु गोटे सेल देखी पारुनी मो माइक्रोस्कोप रे सेल देखुची आउ से माइक्रोस्कोप सेल जो देखुची ता भीतर को इंसर्ट करूची मो डीएनए विथ द हेल्प ऑफ अ नीडल. माने भाव से नीडल रो माने नीडलटा केते सरू हेथिबो से नीडलटा केते सरू होइथिबो जोटा कि मु माइक्रोस्कोप तळे देखिकी मु इंजेक्ट करूची इनटू द सेल. ओके सो आफ्टर दिस व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली मु सेल भितर को मो नीडलटा नेली सेल भितर मु न्यूक्लियस भितर को मो नीडलटा नेली न्यूक्लियस भितर को नीडल नहीं कि देन आई इंजेक्ट ऑल द कंटेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अच्छे मु न्यूक्लियस भितर आराम से छाड़ी देली. सो एटा होची डायरेक्ट इंजेक्शन मु डायरेक्टली सेल भितर को इंजेक्ट करी नेली. दिस इज नोन एज योर माइक्रो इंजेक्शन. नाउ वी विल बी कमिंग टू योर biolistics. What is this biolistic? For this method of your introduction we use your gene guns. आमे एथिरे डीएनए को इंट्रोड्यूस करबा पे होस्ट सेल भितर को वी यूज योर जीन गन्स. व्हाट आर योर नॉर्मल गन? आमे यूज करछे फॉर इन्फ्लिक्टिंग और फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ बुलेट इनटू अ पर्सन. गोटे पर्सन भितर को बुलेट पसैवा पे हेले आमे गन यूज करछे माने गोटे बहुत अधिका फोर्स रे गोटे जिंस जाई कि गोटे ऑर्गेनिज्म भितर को पसुची. द सेम टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड ओवर हियर. वी आर bombarding the host cell with our DNA of interest. गोटे प्रेशर रे आमे बोम्बार्ड करछे आम DNA of interest. सेति पाए आमे कोन करछे फर्स्ट वी आर कोटिंग द DNA of our interest with your microscopic particle of gold and your tungsten. आमे गोल्ड किंबा टंगस्टन रो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रे आमे आम DNA of interest को आमे ताकू कोट करी नेले.
Okay, after coating with a huge, this is a gene gun, with a huge with the application of this gene gun, ये जो coated DNA आमर जो अच्छी एबे bombard होची to host cell. ओके एबे आमर जो बोम्बार्ड जो हैला गुड़ाए सेल जो फोर्स रे जो जाउची एई पार्टिकल गुड़ाक दिस कोटेड डीएनए इट विल बी एंटरिंग द होस्ट सेल. ओके सेम टेक्नोलॉजी आमे गन जेमिति यूज करछे आमे जीन गन टा भी सेमिति यूज करछे बट जीन गन रे वी आर इंट्रोड्यूसिंग योर डीएनए, we are introducing a recombinant DNA into cell. Okay, so this is also known as your, that's why it is also known as your biolistics. Okay, with the help of a gene gun we are applying pressure and introducing the recombinant DNA into your host cell. This is a host cell over here. Now finally what we are doing, what is the final step in this recombinant DNA technology, no, in this introduction of your host, the final step is, or the final technique is your lipofaction. आमे lipofaction द्वारा भी आमे आम recombinant DNA टा को introduce करि परिबा. So what is this lipofaction? Liposomes are circular lipid molecule which have an aqueous interior that carry the nucleic acid. Okay, so we are having your liposome. एटी जो देखुचो एटा होची liposome. What are they? These are circular molecules of your lipid. आमर cell membrane टा is phospholipid. ओके, सो आमे जेते बेले लिपोसोम गोटे लिपिड सर्कुलर मॉलिक्यूल गोटे आमे जेते बेले यूज करछु ए लिपिड मॉलिक्यूल टा इजीली इट कैन इंटीग्रेट विथ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ इंटीग्रेट हे साला परे आम डीएनए टा को भी से भितर को नहीं जाई पारिबो. Okay, that is why we are having your lipid coated vesicle which is your liposome. A liposome गुड़ाकर इंटीरियर एक्वेस थाए. सो ए एक्वेस इंटीरियर भितर आमर recombinant DNA टा को आमे इंट्रोड्यूस करि देले. ओके, ए लिपोसोम टा जेते बेले आमे रिएक्शन मिक्सचर रे आमे जेते बेले देई थाओ ए लिपिड मॉलिक्यूल गुडा को कोन करिवे, दे विल कम एंड एग्रीगेट around this recombinant DNA. So से recombinant DNA टाको पूरा गोटे कवर करके गोटे वेसिकल भाया कर देवे, that we call as a liposome. Then this liposome they get attached to the cell wall of the host, sorry, not the cell wall, the plasma membrane of the host, and they are taken into the host. Okay, so the process, the liposome mediated gene transfer is referred to as your lipofaction. आमे जेते बेले लिपोसोम्स यूज करिकी आमे जेते बेले जीन ट्रांसफर करूचे ए प्रोसेस टाको आमे लिपोफेक्शन कहूचे. ओके, सो वी हैव डेल्ट विथ ऑल द टेक्निक्स, ऑल द मेजर टेक्निक्स व्हिच आर देयर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू योर होस्ट. नाउ what we will be coming to the next step. आमे होस्ट भितर को आमे आमर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा इंट्रोड्यूस कर साले. एबे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा इंट्रोड्यूस कर साला परे then we will be carrying out with a 6 step of our steps in our recombinant DNA technology process, which is isolation of the recombinant host. रिकॉम्बिनेंट हो सारा परे मु केमिति जानिबी मोर को सेल्स गुड़ाक भितर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा अच्छी, एंड हाउ डू आई टेक आउट and how do I isolate those recombinant hosts. For this purpose we have already dealt that we are using the selection markers which are present in vector. आम वेक्टर भितर either ampicillin या antibiotic selection marker थाई पारे किंबा या ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन मार्कर आमे जो ये करथिले सेटा भी आमर थाई पारे. आमे जोटा पढ़ी थिले इन लास्ट क्लासेस ता थ्रू भी आमे स्क्रीनिंग करि परिबा. So by this screening process, it देखो after your this transfection or your electroporation or whatever the method we are using for introduction of this recombinant DNA, या भितर किछिटा सेल भितर आमर प्लाज्मिड ऑफ इंटरेस्ट बा recombinant प्लाज्मिड अच्छी, बाकी सब गुड़ाक नहीं. Okay, so what do? We grow these cells on a growth medium, on a solid growth medium which is containing antibiotic.
आमे एंटीबायोटिक सिलेक्शन मार्कर ऑलरेडी पढ़ी सारचे. So suppose this is having your ampicillin and my plasmid you are having your ampicillin resistant gene. So only those that will be producing ampicillin resistant protein, only those cells will be surviving on this plate and will be creating your colony, whereas the other cell, those who are not having the recombinant plasmid, they will die in this medium, in this growth medium. तो मोर जदि कॉलोनी आसिला से कॉलोनी गुड़ा करे मोर खाली recombinant colonies अच्छी. So by this screening process I have easily identified what are the cells or what are the host cells that are, which are the host cells that are having the DNA of my interest. After this I will be going in for the culture process. मु जानी साला परे तापरे मु एई कॉलोनी गुड़ा को कल्चर करिबी in lab. This is again a picture showing that this is nutrient medium plus ampicillin. ट्रांसफॉर्म सेल अच्छी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल अच्छी मु जेते बेले ए सॉलिड मीडिया विथ एम्पिसिलिन रे ग्रो करछि ओवरनाइट जेते बेले रखुछि देन only the transform cell having the recombinant plasmid they will be forming the colony. Non transform cell they will be omitted out. आमे एटा बहुत डिटेली पढ़ साचे तो मु डिटेल वे रे पढ़ी साचे तो मु आउ अधिका या भितर को मु आउ जाउनी. So now my fifth step, I will come to my fifth step, that is culturing transform cell for cloning of the recombinant DNA. मते मिली गला मोर मते मोर host cell or the transform host cell I have already isolated it. Now what do? Now I have to culture it. मु ताकू कल्चर ए भितरे ए जो ग्रोथ मीडियम भितरे मु आइडेंटिफाई खाली करिनेली जे मोर को होस्ट सेल भितरे मोर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट अछि किंतु मते ताकू गोटे ह्यूज अमाउंट रे मते दरकार. फॉर दैट रीजन व्हाट डू आई गो फॉर योर कल्चरिंग. मु कल्चर कोठी करबी. सो फॉर बिफोर गोइंग इनटू कल्चरिंग फर्स्ट आई विल बी गिविंग यू द डेफिनेशन फॉर योर जीन क्लोनिंग. कारण आमे जो कल्चर प्रोसेस आमे जो करूचे से कल्चर प्रोसेस रे आमे आमर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को आमे क्लोन करूचे बा जीन ऑफ इंटरेस्ट को आमे क्लोन करूचे. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस जीन क्लोनिंग? द प्रोडक्शन ऑफ योर indefinite number of your genetically identical copies of an isolated gene is called gene cloning. Production of your numerous amount of your identical genetically identical copy of the isolated gene आमे जेते बेले generate करूचे सेटा को आमे कहूचे gene cloning. Okay, where is this cloning done? This cloning is done inside the bacteria. How? Because after a recombinant vector is getting into a bacteria, it is replicating. Our recombinant vector is replicating. काहे कि replicate करछि ता पाखरे origin of replication already आमे vector रे आमे पढ़ी साचे. It is having a origin of replication. This origin of replication helps the vector to replicate on its own without the help of the host chromosome. से निजे replicate करिकि ता amount ता बढ़ौछि. ओके एट द सेम टाइम बैक्टीरिया आमे जेते कल्चर करछे माने आमे ताको प्रॉपर ग्रोथ मीडियम दोचे. प्रॉपर ग्रोथ मीडियम देले बैक्टीरिया डिवाइड होची डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करची. सो से डॉटर सेल्स भितरे भी आमर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा रहूची प्लाज्मिड टा रहूची सेमानंक भितरे भी आम प्लाज्मिड टा बढ़ी चलीची. सो वी आर गेटिंग मल्टीपल क्लोन ऑफ अ plasmid or of a recombinant vector. Okay, so how is this culture which is going on? This culture we are carrying out with the help of a incubator. आमर गोटे इनक्यूबेटर रो हेल्प रे आमे ए कल्चर प्रोसेस लैब भितरे आमे ए कल्चर प्रोसेस गुड़ा को करूचे. सो दिस इज माय ब्लू व्हाइट सिलेक्शन. मो ए ब्लू व्हाइट कॉलोनी द्वारा मु एबे सिलेक्ट करने भी मते जेति कि व्हाइट कॉलोनी मिलला मोर व्हाइट कॉलोनी गुड़ा को भितरे मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा अछि आ ब्लू कॉलोनी रे मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाही. सो मु सिलेक्ट करनेली फर्स्ट मोर रिकॉम्बिनेंट होस्ट गुड़ा को किए. Okay, so now I am preparing a media, a liquid media which is known as your LB medium, Luria Bertani medium. Okay, this LB media I am preparing. In this LB media has all the nutrients which helps in the growth of this bacteria. Okay, so what do? I just take मो पाखरे गुड़ाए कॉलोनी अच्छी